Good morning everyone. I Samta Jain and today I am giving presentation on the topic of various losses in transformer. So without moving further, let's discuss what is transformer. Transformer. A transformer is a device that transfers electrical energy from one AC circuit to another AC circuit without change in frequency, either increasing or decreasing voltage. In any electrical machine, लॉस कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पावर और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस सो ऑल द मैकेनिकल लॉस इन इज एब्सेंट इन इट एंड ओनली इलेक्ट्रिकल लॉस इज प्रेजेंट इन इट लाइक iron loss, copper loss, and all the losses we will be discussed in further slides. So mainly there are four types of losses in transformer. First is copper loss, second is iron loss, third is stray loss and fourth is magnetostriction loss. So हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि कितने टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में. So let's dive deeper into each loss. Our first loss is copper loss. Copper loss is the energy loss in the form of heat in the copper coil of transformer. Copper loss can be calculated by the formula P is equals to I square R. Copper loss is also known as ohmic loss and I square R loss. बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल होती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी और वो दोनों कॉइल कॉपर कॉइल से बनी होती है और जैसे कि हम जानते हैं जो कॉपर कॉइल होता है उसमें कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है and whenever the current is passing through that coil so some resistance opposes that current and some heat is generated और इसी की वजह से जो हमारा एनर्जी लॉस होते हैं इसी लॉस को हम कॉपर लॉस बोलते हैं. So let's see how to overcome copper loss. Copper loss can be minimized by using thick copper wire. As we know the relation between resistance and area, resistance is inversely proportional to area. Whenever the area is increases, resistance decreases. So when we use thick copper wire, we can decrease this loss. By minimize or the other method is by minimizing the gap between winding of copper coil in a transformer. Iron loss is also known as core loss. Iron loss is the energy loss in the form of heat in the iron core of transformer. This is due to the formation of eddy current in the iron core. बेसिकली जो आयरन लॉसेस को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं हीट का फॉर्मेशन होना आयरन कोर में बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईडी करंट और बाय हिस्टेरेसिस लॉस. So iron loss has two types, eddy current loss or hysteresis loss. So let's discuss. Eddy current loss. Eddy current loss in transformer is defined as energy loss due to the flow of eddy current in core of transformer caused by changing magnetic field. एज वी नो हमने जो करंट इनपुट करा है वो एसी करंट और वो डायरेक्शन अपना टाइम के साथ चेंज करता रहता है. तो जैसे ही कॉपर कॉइल के थ्रू जो एसी करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इसी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और जो हमारा एसी है वो चेंजिंग नेचर का है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंजिंग नेचर का ही जनरेट होता है. और जैसा कि हम फराडे की फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हैं वेन एवर द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्फेस so EMF is induced in that circuit or if the circuit is closed so the current is flowing through the circuit. तो इसी की वजह से जो ईडी करंट है वो आयरन कोर में फ्लो होने लगता है और इसी की वजह से हीट का फॉर्मेशन होता है आयरन कोर में और इसी को हम एडी करंट लॉस बोलते हैं. Hysteresis loss. Energy loss due to the magnetic field reversing direction. Hysteresis loss is due to the repeated magnetization and demagnetization in the transformer core. बेसिकली जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था हम एसी करंट का इनपुट करते हैं ट्रांसफार्मर में और जो कॉपर कॉइल होता है उसके थ्रू हम फ्लो करवाते हैं एसी करंट को. जो हमारा आयरन कोर होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है क्योंकि उसके आसपास हमने करंट फ्लो करवाते हैं. जैसा कि हम जानते हैं जो एसी करंट होता है वो चेंज होता है डायरेक्शन करता है चाहे चेंज करता है टाइम के साथ. तो जो हमारा आयरन कोर होता है वो भी एक बार मैग्नेटाइज होता है एंड अदर टाइम डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है उसका. तो इसी जो रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन परफॉर्म करता है हमारा आयरन कोर इसी की वजह से हीट जनरेशन होती है और इसी हीट जनरेशन को हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं. So let's see how to reduce iron loss. एडी करंट लॉस को हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर में से बिकॉज क्योंकि जो एडी करंट है वो फॉर्म होता है आयरन कोर में और आयरन कोर को तो हम हटा नहीं सकते हैं ट्रांसफार्मर में से. सो बेसिकली वी कैन रिड्यूस एडी करंट लॉस बाय यूजिंग reducing the thickness of steel
core or iron core, or it can be minimized by using laminated iron core. Stray loss. Stray loss in the transformer refers to energy loss that occur due to the leakage flux in the transformer core and open winding. These losses are not accounted for the main operational losses such as copper loss and iron core loss. बेसिकली इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रे लॉस कैन बी डिफाइंड एज नॉट ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग लिंक विद सेकेंडरी वाइंडिंग, सम ऑफ द फ्लक्स इज escape from this process and this leads to energy loss, and we will define this loss as stray loss. So let's see how to reduce stray loss. Stray loss can be reducing by minimizing air gap in iron core or by using high permeability material. Both can use to reduce stray loss in transformer. So our last but not least loss is magnetostriction loss. Magnetostriction loss. Magnetostriction loss in a transformer occurs due to the changing magnetic field, which causes the core material to expand and contract. This repeated expansion and contraction leads to energy losses in the form of heat. Basically जो हमारा आयरन कोर होता है वो उसका एक्सपांड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस बोलते हैं. बेसिकली जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस होता है वो ही हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ट्रांसफार्मर हमारी हमिंग और बजिंग नॉइज प्रोड्यूस करता है वो इसी लॉस की वजह से प्रोड्यूस करता है, और इसी की वजह से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है और इसी को हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस बोलते हैं. So magnetostriction loss can be reduced by using high permeability material, or it can be reduced by using a well designed iron core. Both can reduce magnetostriction loss. सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, जो हमारा आइडल ट्रांसफार्मर होता है वो तो 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, बट जो हमारा प्रैक्टिकली जो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो सिर्फ 80 to 90% ही एफिशिएंसी को अचीव कर पाता है. बट बाय यूजिंग सम things, we can achieve efficiency of 98 to 99% by cooling the transformer properly, by shredding of core must be greater, permeability of core material would be higher, or by using thick copper wire instead of thin copper wire. By using all these things we can make our transformer to achieve efficiency of 98 to 99%. So hope you all are understand. Thank you for listening me. Thank you everyone.